those who are attending first day. We have started last week. They have already kind of covered some basic introductory lectures almost for every subject. Almost for every subject. From today onwards, we'll start subjects and teaching. Right? So I hope you all must be knowing about the schedule for this week. My dear. So for those who don't know, at the end of the lecture, I'll let you know what is the schedule of this week's schedule. So far as the schedule is concerned, every week you will get the updates. More or less, lectures and days would be fixed throughout the year. But if there is any contingency, then only you will find that there is a change. Otherwise, we have a fixed schedule. We will open a few subjects initially. Right? We will complete those subjects, and then the slots which are vacant, they will keep on adding new subjects. And thereby, at the end of the year, let us say 1 year, we will complete the syllabus. Right? This notion of completing syllabus is very interesting. The reason being, you may assume that completing syllabus is nothing but imparting an ability to understand each and every damn thing that is under sun. But that is certainly not the case. Completing syllabus is touching almost every point of the syllabus. And at least important points wherein we'll go into deep understanding or deeper understanding of those concepts. If we start teaching to the level that one may expect, spoon feeding, right? That will at least take us 3-4 years to complete the syllabus. So that is definitely not the target here. We have 1 year at the hand, and we will try and complete, or we will cover the syllabus, I will say, right? Instead. Second important point. I don't know whether I spoke about this in last lecture or not, but I feel like this is intentionally I need to speak, and that is about your attempts. Most of you, probably 90% of you, might be planning for the next attempt, that is 2023. Correct? Right. So I'll speak about that for a while, and then I will start the lecture. I'm going to remove that. Sir. Generally, regular practice. Once you are habitual, you will keep the counter असे कोणतं बोलणार नाही. काय हळूहळू मुलं they become custodian of remotes. It's a bit suffocating. थोडंसं आपण टेम्परेचर करतो. बरं काय सांगतो? Attempt. So I think most of you, probably 90% of you, might be preparing this for first time. Some of you might have attended our 3 years batch, right? And remote this. Some of you might have attended the 3 years batch, and so you might be aware about the syllabus. But I would suggest you, in fact, all of us, this is on behalf of almost all faculties, right? That I would suggest you, or we suggest you, that don't go for, or don't rush yourself for next attempt. Wait. Wait for one more attempt. Don't jump into the attempt. That would be intentional suicide. Generally, there is peer pressure, there is family pressure. Then you have your relatives. They are the most important players in the game. So, वो अपने IPL में cheer leaders होते हैं, cheer leaders से मैच नहीं जीता जाता. ये समझते हो ना? इतना याद रखो, जब आपका प्रिपरेशन होगा, तब आप पहला अटेम्प्ट करो. दिमाग में ये सोच के नहीं चलना है कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट. हम लोग प्लान तो वैसे ही करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आता रहेगा that you will require 1 complete year just to get a grasp of these subjects, just to understand those concepts. Some of you might have studied for last maybe 1 year, 2 years, might be studying. So a few days ago, I got a call, a random call, and they were saying that my daughter has been preparing for 1 year on her own, thanks to YouTube. She has been preparing. Now we are thinking of writing practice. I said, wonderful. You bring something if you have written. त्यांनी आणलं ना ते आणि त्यांना मी त्यांच्यासमोर बोलू नये, मी त्यांना निगेटिव्ह मार्क्स दिले नसते. 0 तर थोडाच. I am not underestimating your capacities. I am trying to tell you what is practically feasible and possible for you all. It's not that you cannot give next attempt and cannot clear it. That is definitely not the case. If you can be that committed and can sit for at least 16 hours a day, henceforth for 365 days, right, fully focused, right, I think that is something which you can definitely make. I don't have any doubt, any damn doubt. You see yourself if you can manage to sit for at least minimum 15 hours. So minimum 15 hours include 4 hours for teaching also.
teaching and rest of the time is 14 hours, 11 hours, without any fail, without any failure. If you can manage to do that, I guess that is possible. Or at least we can reach near the target. Because see, you have to complete your GS, you have to complete your option subject, you have to complete your writing practice, you have to complete your writing practice, right? And there are a number of things. Right? When it comes to writing down something, you will face a lot of challenges which you have never even imagined. Right from understanding the question, वहाँ से शुरुआत है ना? तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप खुद को हरास नहीं करो. मेरा बाकी कोई इंटेंशन नहीं है बताने. अगर आपकी मर्जी है नहीं हरास होना ही है भाई. तो ना बिल्कुल नेक्स्ट ईयर अटेंड करो. कोई दिक्कत नहीं. We have been dealing with the students. We have been speaking with them for now. I have been here for almost 15 years. This is 15th year I'm teaching polity or maybe other subjects also. So this is over the bit of this is an experience that we gather over the bit of time, and we know what issues you face. We also have gone through it. Are you getting it? Why in the first lecture this sort of pravachan? The reason being, it is nothing but cleaning the slate. Everybody. लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, मुझे बिल्कुल मालूम एकदम सजावटचं फॉर्म भरून बघतो. त्यात बघण्यासारखं काहीच नाही. कळलं काय बघणार म्हणजे लकीली बाय चान्स तसं असेल तर मग सगळे झाले असते. प्लीज हे तुम्ही आत्तापासूनच पेरेंट्सला पण कन्व्हिन्स करा. कळलं याच्या मागे कारण सांगतो. यू हॅव 1 year, complete 1 year. Give your full dedication for understanding things. We will talk about writing practice. जब हमारा एक पार्ट कुछ खत्म होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज दिया जाएगा. आप भी पूछ सकते हो सर हम लोग कब लिखने वाले. लिखने का एक ये क्रेज चल रहा है आजकल. हैशटैग राइटिंग प्रैक्टिस में करायला हरकत नाही. तो कळलं म्हणजे तुम्हाला. तो कोई बात नहीं, हैशटैग राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं. आप में से फिर भी कुछ लोग आएंगे, मुझे बिल्कुल मालूम. यू आर वेलकम. बिल्कुल आप, मैं आपको बिल्कुल कुछ क्वेश्चन दूंगा. मैंने देने की जरूरत नहीं है. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यूपीएससी ने बहुत सारे ऑलरेडी वेबसाइट पे रखे हुए हैं. सॉल्व करके कुछ भी लेके आओ उसमें, कोई बात नहीं. बाकी कुछ फैकल्टी को आपको बोलेंगे 10 कदम दूरी रहना, लिख के लाओगे अभी पहले एक मिनट. नहीं मैं कारण बता. देखो लिखना कब है, व्हेन यू हैव समथिंग क्लियर. मैं अगर अभी आपको बोलूं ना आपके बारे में 500 वर्ड्स में लिखो, खुद के बारे में, तो समझ में आ रहा है ना आप कहाँ हो. तब शायद नाम लिख पाओगे, है ना. उसके बाद स्कूलिंग यहाँ हुआ, है ना, मैं रहता यहाँ पे था, एड्रेस मेरा ये है, फोन नंबर ये है, मेरा आईडी. इसके बियॉन्ड ये आपका है ही नहीं. आपके बारे में कुछ नहीं. ये तो आपको जो एट्रीब्यूट्स है इधर उधर से चिपके हुए, उसके बारे में लिखोगे आप, है ना. सो प्लीज डोंट रश इनटू राइटिंग डाउन थिंग्स. राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल किया जाएगा और आपको करना भी चाहिए तब जब when you have required prerequisites for writing. ठीक. और prerequisites में मैं ABCD मालूम होने की बात नहीं करता. I am also not talking about grammar. Let us not focus on grammar for a while. That is not an issue at all. The issue is, do you have that approach and required concepts and understanding of this concept to write something? Is it clear to everyone? Yes. Right. I am not discouraging you from writing. If you want to submit some sort of a sample, maybe after 3 or 4 months of classes or lectures, you may submit some. No issues with that. Those who are from 3 years batch, or those who have done sort of a foundation batch, whether in uni or maybe in other institutions, or those who have completed one year online course or module or blah blah blah, जो भी ऑनलाइन है. अगर आपको लगता है कि आप कुछ लिख पाते हो या फिर लिख सकते हो, जो सही लिख सकते हो, तो आप 1-1.5-2 महीने के बाद कुछ लिख के लेके आओ. उसको इवैल्यूएट करके देता हूँ मैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी पेपर्स. उसके बाद डिसाइड किया जाएगा आगे लिखना है नहीं लिखना. तब तक के लिए फोकस रहेगा अंडरस्टैंडिंग. इज दिस थिंग क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? और एक चीज नेक्स्ट, मैं लास्ट टाइम बताया मैंने, फिर भी मैं बता रहा हूँ वापस, क्योंकि कुछ लोग नहीं. सर क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी. अब इसका ये सवाल वापस नहीं पूछा. क्या पढ़ना है हमें? 11th स्टैंडर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम का एक एनसीईआरटी है, उसी को पढ़ना है. कितने बार पढ़ना है? जब तक आपका इंटरव्यू का कॉल नहीं आता तब तक पढ़ना. ठीक. 1 2 सर 10 बार पढ़ लिया, बताओ भी नहीं मुझे कितने बार पढ़ लिया. जिस दिन इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा उस दिन रख देना उसको. ये क्लियर है एवरीवन? वेरी नेक्स्ट. लक्ष्मीकांत बिल्कुल पढ़ो, कोई इशू नहीं है मुझे. मेरे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद है. और मैं उसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा वही, लेकिन उसमें से नहीं. आई गॉट माय सोर्सेस एंड आई विल टीच फ्रॉम दोस सोर्सेस एंड आई विल एंश्योर दैट व्हाटएवर आई टीच यू अंडरस्टैंड फुल्ली. जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं उसमें बिल्कुल एंश्योर करूंगा कि आपको समझ में आए. राइट. क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. इसके बियॉन्ड भी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो वो समय आने पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा बुक रेफर करना है. I will tell you when to refer and what to refer. अभी क्या पढ़ना है? ऐसा काही शंका कोणा? किसी को कोई दिक्कत? ते जमेल ना सगळ्यांना? सर एकदा एनसीईआरटी वाचून झालं, आता काय परत वाचायचं, है ना. तर कसं वाचायचं? एक चॅप्टर वाचला, तोच चॅप्टर परत वाचा. किती वेळा वाचा? 5-6 वेळा एका दिवशी वाचा. मग पुढच्या चॅप्टर. नोट्स काढायचे का सर? अजिबात नाही काढायचे, फक्त वाचायचं. नोट्स काढायची ही वेळ आपली आता नाही. आपण 2-3 महिन्यानंतर नोट्स विचार करू. ते क्लिअर आहे? जर कुणाला असं वाटत असेल नाही सर काय मला लगेच समजतं म्हणजे त्यामुळे मी नोट्स काढतो, तर काढ, फक्त मला दाखवायला आणून नका.
ज्यावेळेला मी तो टॉपिक घेईन त्यावेळेला तुम्ही नोट्स किती पूर्ण आहेत अपूर्ण आहेत त्यात काय अजून पाहिजे ते तुम्हाला समजेल. त्यावेळेला तुम्ही त्याचा विचार करा. आय एम जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स ओनली टू सेव्ह युअर time and efforts, because ultimately you will end up doing same things again and again, which is in better words or maybe in worse words called as down to earth. Clear everyone? क्लास में जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो हर टॉपिक के लिए बहुत सारा डेप्थ एक्चुअली है. काफी बार मैं ऐसे बोलूंगा आपसे, हम लोग इस टॉपिक को यही तक पढ़ते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे. और उसका मतलब ये होता है जितना यूपीएससी के लिए जरूरी है उतना मैंने आपको बताया है ना, अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से. वहां से आगे वैसे डिस्कस करने के लिए हम लोग सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक साथ डिस्कस कर सकते हैं. चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड छोड़, आर्टिकल 14 इक्वालिटी का कांसेप्ट हम लोग एक साथ डिस्कस कर सकते हैं और हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं. आई एम नॉट जस्ट ब्लफिंग हियर, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. कुछ कुछ चीजें रहेंगी जो मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ही डिटेल पढ़ाऊंगा इंटेंशनली, क्योंकि मैं आपका एक साल का आइटम का इमेजिन नहीं कर रहा. मैं सोच रहा हूँ कि आपको आने वाले 3-4 साल कभी भी 3-4 साल पूरे लाइफ आपको कभी ये दिक्कत ना हो, ये कंसेप्ट नहीं समझा रहा. ये क्लियर है सगैन? और एक चीज आपको ये बिल्कुल समझ में आती है क्यों इस तरह का अप्रोच और एटीट्यूड क्यों है पढ़ाने में, जब भी मैं बताऊंगा. इसके पीछे कारण ये समझ लीजिए आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर नेक्स्ट उसमें आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, मेंस भी क्लियर कर दिया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपको लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन आपको पोस्ट नहीं मिला जो चाहिए, आपको वापस बैठना है. या फिर समझ लो प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो गए 3-4-5 साल, जो भी हो ही सकता है ना. सब मैं जस्ट है ना. यहाँ से आगे पॉलिटी के कंसेप्ट समझने के लिए आपको कभी भी किसी भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट आई विल एंश्योर यू. इज दिस थिंग क्लियर? While doing this, it is possible that we may have to compromise on some topics. I am saying compromise. I will definitely give you orientation of those topics, no doubt about that. But then I may not allot those many lectures and that in-depth engagement for those topics. जैसे constitutional bodies, हम लोग उसमें से 1-2 bodies देंगे, एकदम in-depth में बताऊंगा आपको. लेकिन उसको एक बार आपको वो समझ में आए तो आपको बाकी सब समझ में आए. वैसे नहीं होगा कि नहीं समझ में आई बात. तो इन चीजों को याद रखिए. और लास्ट चीज, आप जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हो क्लास में, जो भी आपको क्वेश्चन लगता है कि सर ये अभी रिसेंटली ऐसे हुआ था या फिर मुझे ये समझा नहीं सर, आप समझाओ. मैं क्लास में किसी के भी जो आपके सवाल है उसको बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे. बस ये हो सकता है कोई टॉपिक है जो हम लोग अभी देख रहे थे, प्रीएम्बल हम लोग अभी देखेंगे जिसने इक्वालिटी का कंसेप्ट है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. लेकिन आप में से कुछ लोगों को फिर भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपने समझ लीजिए कुछ पहले पढ़ लिया, ये सर डिस्क्लेमर कर देंगे आपका सबको, ठीक है. सो आपने शायद कुछ पहले पढ़ लिया तो आप बोलोगे नहीं सर आर्टिकल 14 में तो ऐसे दिया हुआ. सो आई विल से दैट यस वी विल डिस्कस दैट व्हाइल डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स. अभी के लिए नहीं डिस्कस. ऐसा मांगे कारण है, इट इज नॉट denying you an answer. It is basically I don't want to give you answers which are short and not complete. क्योंकि किसी एक चीज को समझने के लिए कंसेप्चुअल एक टाइम देना पड़ता है. तो वो टाइम उस वक्त वो लेक्चर में वो पर्टिकुलर स्लॉट में हम लोग बिल्कुल एट लेंथ देंगे. ठीक, आपने पूछा हुआ लगभग हर क्वेश्चन मुझे पूरे साल याद है. मैं किसी को अगर आंसर नहीं दिया मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम विल सी दिस, है ना. और आज पहले लेक्चर में आपने पूछा था और हम लोगों का वो लेक्चर लास्ट बैच का लास्ट लेक्चर है, फिर भी मुझे याद रहता है. एंड आई विल आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में. मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा किसी ने पूछा था, मुझे नहीं मालूम रहेगा कि किसने पूछा था, लेकिन किसी ने पूछा था ये एक क्वेश्चन, उस वक्त आपको वो क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर होगा. ठीक कर रहा है एवरीबॉडी. चलो तो अब हम लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी चालू करते हैं. आगे जिससे करेगा इज इट विजिबल? एकदम क्लियर? लास्ट बेंच. ओके ग्रेट. आप चाहो तो रनिंग नोट्स दे सकते हो, आप चाहो तो आप आपका लक्ष्मीकांत लेके आ सकते हो. अगर उसमें से आपको कुछ पूछना है, कुछ स्टेटमेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं. एनी टाइम क्वेश्चन. राइट, आई अंडरस्टैंड 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी. आई कैन स्पीक. मराठी थोडंसं व्यवस्थित नाही बोलत मला, कधीतरी गडबड होऊन जाते. हिंदी पण ठीकठाक बोलतो, इंग्लिश पण ठीकठाक बोलतो. त्यामुळे बोलणं आणि समजणं या 3 लँग्वेज मध्ये मला जमतं. त्यापैकी तुम्ही कोणत्या लँग्वेज मध्ये प्रश्न विचारता चालेल. बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी ॲट लीस्ट सम ऑफ यू दोज हू मे नॉट अंडरस्टँड मराठी. डू वी हॅव एनीवन हियर? वेरी गुड. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आपका क्या समझा? बाकी मराठी में जो मैंने बोला तो समझा नहीं, थोड़ा समझा नहीं. हाँ गुड. सो यू विल इमीडिएटली जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल रिपीट इन हिंदी और मे बी इंग्लिश, है ना. क्योंकि बीच बीच में शायद कभी होता है कि मैं मराठी में है ना बह जाता हूँ. वो बहने की बात नहीं है, बहने की बात नहीं है. होता ये है कि एट टाइम्स आई गिव सम एनालॉजी, राइट, एंड देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स व्हिच यू यूज इन मराठी. सो आई है ना सैंडविच कर देता हूँ इसमें. तो उस वक्त अगर नहीं समझना है ना, कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं समझा तो बिल्कुल हाथ ऊपर करो. बाकी कोई भी जो डोंट अंडरस्टैंड. Right. So, प्रवचन is over. Let us start with प्रवचन discourse. Is over. Let us start with topic, the preamble, the constitution. But then before going into this, let me just brief you about it. In fact, I have some questions for you. पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं. हाँ, one more. नहीं ये मैं पहले क्यों बताता हूँ ना लेक्चर से पहले? Because I want you people to get acquainted with what is my method of teaching. Right? Then it becomes एक हार्मनी में बैठेंगे ना, फिर हम 2-2 घंटा रोज बैठना यार मजाक नहीं. कभी-कभी शायद 4 घंटा बैठेंगे हम लोग. तो आप झेलोगे फिर अगर हार्मनी में नहीं चल रहा है. झेलने की बात नहीं होती.
कैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर आप कुछ आंसर दो, काउंटर यू, दैट इज इंटेंशनल, नॉट टू डिस्करेज but to trigger your inquisitiveness. You are getting this, right? So don't get discouraged. Even if you are speaking in Marathi, that is absolutely fine. Though batch is English medium batch, right? You ask me question in Marathi, no issues with that, right? But I will ask you counter questions, right? You may not like my tone at times while I ask you counter questions, but take it positively, right? Over the period of time, you will realize this, right? You will definitely realize this. But then I don't like monotonous lectures. That is one-sided. See to it that you participate, right? Questions that you are asking must be relevant to topic, not political questions, right? If at all any political thing is to be discussed, I will take initiative. Here we are not to discuss politics, right? But by default we are going to touch the politics. Is it clear? Because we have clearly defined syllabus, right? We need not to we need not to jump out of this place, है ना? शायद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? जैसे आज तो चल रहा है, निकाल लागला नहीं ना, चालू है आर्गुमेंट्स, तो अब ये तो ऐसे होता रहेगा ना, तो फिर ये चीजें बाय डिफॉल्ट डिस्कशन में आएंगी. महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली के मागचं तो काही एकंदरीत आपलं राजकीय नाट्य ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा, दैट वाज गोइंग ऑन हियर, आज कंक्लूड हो जाएगा होपफुली. तो ये चीजें डिस्कशन में आएंगी, बाय डिफॉल्ट आएंगी, तो बस उसको एंजॉय करो, है ना? बाकी पेपर में लिखने जैसी कोई बात नहीं है उसमें, जो लिखने जैसा है वो मैं बता दूंगा. चलिए, और कुछ बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हो सकते हैं, पहले 1-2-3 लेक्चर में ऐसे में जैसे याद आएगा बता दूंगा. So let us talk about constitution and its preamble. But before we start, I have few questions as I said. The first question is, what is constitution? Second is, why do we need it? So what do you think is the constitution? Set of rules. Very good. Or organic law of land. So bas. Ankit, you can drop message in chat box. Online students, you can drop message in chat box if you want to answer the question. Yes, so organic law of the land, or कुछ time answer करें. Set of rules, or principles of what? Defined set of rules which need to be followed by every individual. Okay. Guiding principles. Guiding book. Rights of individuals. So that comprises a constitution, or it is a part of the constitution? Part of a constitution. Yes, correct. So he says, Prakhar, identity card. Yes, identity card. Set of laws which tells how the state is to be governed. Okay, perfect. Sanket. So defined set of rules which need to be followed by every individual. Individuals can follow, whereas the institutions may disobey the rules. Or institutions also needs to follow. So institutions may पकड़ते थे. अच्छा चलिए, और कुछ? Sorry. Each and every Indian should follow the rules. Correct. But then institutions are not Indians. Individuals are Indians. So institutions may not. Any institution. Okay. Coming under Indian constitution must follow. Torch of it. The preamble is not source of power of the state. Okay, fine. Defined as a procedure laid down to establish certain rules and regulations to form the government, to govern the people inside the government, and to state what the government should or should not do, and also same for the citizens inside the nation. ठीक है. So ओके, perfect. और कुछ? अच्छा ठीक है, चलो जो भी आपने बोला सबसे अभी मैं नहीं बताता हूँ, आप बताओ मुझे कि क्या जरूरत है ये कॉन्स्टिट्यूशन. मुझे नहीं समझा कि हमने 1950 में लाया ना कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950, बरोबर ना? नहीं, उससे पहले आया था. 26 November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves implement commencement of constitution कब से हुआ? रिपब्लिक डे. इंडिपेंडेंस डे क्या हुआ? गॉट इंडिपेंडेंस. तो 26 तारीख तक हम लोग क्या कर रहे थे? 26 जनवरी 1950 तक क्या कर रहे थे? ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट कर रहे थे, डिबेट्स चल रहे थे. तो तब कौन रूल कर रहा था? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1947 का तो एक्ट बोल दिया कि इससे पहले वाले जो भी पास किए हुए लॉज है उसका तो कुछ लागू नहीं होगा. चलिए कोई बात नहीं. मुझे आप ये बताओ कि जरूरत क्या है इसकी? जो अभी इसने बताया, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए. Why do we want democracy? पहले भी अनार्की कहाँ थी पहले, like before constitution, before advent of Britishers. तो तब तो अनार्की नहीं थी. इक्वालिटी चाहिए. कौन है? हाँ, जस्टिस भी चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, है ना? फ्रीडम, यूनिटी चाहिए नहीं चाहिए?
वो भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए. यस बोला. Yes, yes, you are. Okay, accepted. Partly. You're doing law. That's fine. There is one issue. It's not that we were not sovereign. We were sovereign. We had rulers, those who were sovereign, right? But the term that you used, it is to constitute something. Let us not talk about nation at this moment. But it is to constitute new set of government or set of governance that we brought in this set of rules. It's not the case that we did never ever had constitutions earlier. It's not the case that we never ever had sovereigns ruling us. Before independence. So it is to civilize us. Okay, but then I don't even think that we are civilized now. But then that's fine. No, that's fine. That's fine. So I was telling you, yeah, it's not that we never had constitutions at all. We had constitutions at all. It's not that we were not sovereign. We had sovereigns ruling us. You know. It's not that the territory was not defined. It was defined very well earlier also. It's not that we didn't have people belonging to this land. I'm not saying India at this moment. I'm not using word India at this moment. We had people belonging to this land. It's also not the case that those people did never show or gave legitimate right to the sovereign to rule. They all gave right to sovereign to rule, right? So it was there right from ancient time, ancient to modern, right? But then there is something which kept changing, right? There is something that changed suddenly, I would say, on 26th of January 1950. And that change needs to be understood to understand why do we have this constitution. I'm saying this constitution. There could have been any other set of rules and we would have called it constitution. We already have got a number of set of rules, though not written, but are applied in day-to-day life, and they actually constitute or regulate major part of our activities on a day-to-day basis. It's not that you are only ruled by the formal laws passed by the legislature, or formal law or the constitution. It's not constitution which is ruling you every day. It's basically there are rules already existing, not written, but have been going on since ages together, which govern you. Right? So, practically speaking, when we talk about this constitution, it came into existence, let us say, or it commenced on 26th January 1950. And thereafter, as he said, this becomes a rule of this land. Right? That doesn't mean that there was a vacuum earlier. Right? During British period, we had laws passed by the British government. So there were rules. See, the question is not here whether those rules were fair enough or not, right? Whether they were arbitrary, whether those rules were logical, reasonable or not. That is not at all a question. The question is whether we had a rules earlier or not. So we had number of rules. We had rules right from the first civilization that took place here in India, and that is Indus civilization. Right? Even Indus Valley had certain set of rules. On what principles those rules were based is none of our interest at this moment. Right? That we will talk about a bit later on. The question is, all those rules, govern the societies then existing. Right? So if you look at Indus Valley civilization had rules essentially based on the principle of trade and economic needs of that particular civilization. Vedic and later Vedic phase being more particular, had rules which were essentially egalitarian, almost more or less equal society, right? Society I'm saying, not economy, right? If you come to later Vedic phase, you'll find that the new rules came into existence which are sort of written, or maybe you can find those rules or the commentaries on those rules in different books like Puranas and then Brahmanas and commentaries on 4 basic principal Vedas, right? Then when you enter into Buddhist and Jain era and Buddhist era, you'll find that there were other rules laid down by these. So basically we are talking about religions here, if you can know, right? All these religions basically develop a sort of set of rules to govern your life, whether it is political, social or economic, right? The core Varna system that you all are or we all are aware about is nothing but set of rules, a set of rules governing that society or our society, quite prominently during ancient time, right? To a certain extent during medieval time also, and then in modern time also. But then in modern time now, those set of rules which are already existing, they are referred to as something called as customs. And we are going to use this word when discussing Article 13 later on. But then they are referred to as customs, right? So these customs also have force of law. They in fact behave or they in fact work as if they are rules. Right? You will find that you all or we all follow some other customs. Am I correct? Do you all follow the customs or not? Of course, yes. There are multiple customs which we keep following, and those customs are not written in the Constitution. Right? So basically, Constitution is not made for that. Right? What Constitution is made for, that we'll discuss. But then there are always rules. There were, there are, and there will be. What will differ? The principles on the basis of which you design the rules will differ. So in ancient time, depending upon the economic needs
to sustain the society, you'll find that the four varna system was created, right? Then caste system came into existence. But if you look at the caste system, you'll find that every caste has got a specific task to be performed in the overall economic apparatus. Am I correct? Everyone? Yes. Everyone. Now, this becomes very clear that as per the economic needs of the society, probably some set of rules were defined or they were implemented or executed. Who used to draft the rules? Who used to execute them? Who used to adjudicate the matter? That is not our interest at this moment, at least at the outset, today, right? But then, please remember that there wasn't any single year, or maybe you can say era, where there were no rules. There were rules. Constitution is just a step ahead, right? Nothing more than that. Constitution बस एक चीज आगे जा रही है, एक स्टेप आगे जा रही है. तो आप बोलोगे नहीं सर, कस्टम्स तो लिखे नहीं है कहीं. हाँ, कहीं आपको शायद उसमें से कुछ चीजें लिखी हुई मिलेंगी. कस्टम्स की जब बात करें हम लोग, है ना? हो सकता है आपको कुछ चीजें ना लिखी हुई मिलें, लेकिन क्योंकि कस्टम्स है, उनको एंटिक कैरेक्टर होता है, तो एंटिक कैरेक्टर वाले सभी कस्टम्स जो कंपैरेटिवली रैशनल हो सकता है, उनको हम लोग आज भी रूल के जैसे फॉलो करते हैं. कुछ समझ में आ रही है? एक. अब हम लोग अगर जाके पीछे देखें, तो आपको वैसे तो बहुत सारे रूलर्स मिलेंगे. Kings, sovereigns in India, those who used to, pronounce, or you can say proclaim. They used to make proclamations of some principles or maybe some orders and some guidelines and etc. Right, which were to be followed by citizens, not citizens, subjects. Which were to be followed by the subjects. Ashoka the Great, first time, lays down all those rules in the form of rock edicts. Those rock edicts can be definitely referred to as first ever experiment done by us, right, to write down something called as constitution. Now here it is not matter of writing down. एक लक्ष्य रखा है. Just one more thing. पॉलिटी के लेक्चर में अगर आप 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे बैठे बैठे कहीं बाहर घूम के आओ, कॉन्टेक्स्ट चला जाए, तो आपको बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन से बैठना है, याद रखना. So that was the first effort taken by Ashok the Great to write down something on the rock, right? They are referred to as rock edicts, right? It is not writing down something makes rule or rules more legitimate. नीट लक्ष्य है. कोई रूल को लिखना उसकी ऑथोरिटी का गारंटी नहीं देता. वो रूल जो है, जो लिखा गया, वो एक किस तरह से लिखा गया, दूसरी बात कितना रैशनल है, ये दो चीजें ये डिटरमिन करती है कि क्या वो रूल ऑथोरिटेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अगर कल को पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया और बोल दिया कि देखो यार, सोसाइटी में इशू ये हो रहा है कि वुमेन आर नॉट सेफ. देखो, इंटेंशन तो काफी अच्छा है, वुमेन को सेफ रखना है ना? चलिए उल्टा करते हैं, वुमेन के बारे में कब तक बात करेंगे. In society, the issue is men are not safe. कौन safety? Men are not safe. And to protect them, there is a rule which says that after 7 o'clock in the evening, no men will step out of their dwellings or maybe homes. चलेगा? अरे यार, तो इंटेंशन तो इतना अच्छा है. आपको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है. All boys, what do you think? अच्छा, चलिए वुमेन के लिए अगर लागू करें, तो और एक बात, पॉलिटी के लेक्चर्स में तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आंसर देने से पहले बस आप थोड़ा सा सोच लिया करो, लेकिन वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा, है ना? सम ऑफ यू वुड से दैट यस इट्स गुड, वी विल नॉट स्टेप आउट ऑफ होम आफ्टर 7 o'clock, है ना? और सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको एकदम क्लियर, सिर्फ वुमेन नहीं, मेल्स भी बोलेंगे अरे नहीं, वुमेन बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, आउट ऑफ केयर एंड सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा, बेसिकली आउट ऑफ पेट, है ना? सही बात, एक्सेप्ट करोगे आप? बुक में लिख दिया गया, मतलब एक रूल है, समझ लीजिए कि आईपीसी में सेक्शन डाल दिया हमने, छोड़ दो. 7 बजे के बाद अगर कोई, if women comes out of the home and if she is being like, if her dignity stands violated, right, then state is not responsible. अब बोलो, नहीं ना चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? रैशनल नहीं लगेगा, है ना? सही नहीं. अच्छा, मेन के लिए कर सकते हैं ऐसे. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, men have been facing domestic violence, देखो एक्सेप्ट नहीं होगा. women have been facing, तो हमने बिल्कुल लॉ बना दिया. तो यहाँ पे क्या मैटर करता है? मैंने जैसे बोला आपको, पर्पस. किसी भी लॉ का, हर लॉ बनने में वो वैक्यूम में कोई लॉ बनता नहीं. आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी, मतलब हमारा वैक्यूम में नहीं बना, है ना? जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, वैक्यूम में नहीं बना, उसके पीछे कुछ पर्पस है. ठीक, एवरीबडी, एवरी टाइम लॉ, कोई भी किसी भी लॉ की बात करो, उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, तभी वो लॉ बनता है, अदरवाइज वो बन ही नहीं सकता. लेकिन वो पर्पस और रैशनैलिटी, ये दो चीजें अगर मैच ना करे, तो वो लॉ बन के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बुक में रहेगा, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं. आई होप यू आर गेटिंग दिस, एवरी वन ऑफ यू. इसलिए मैंने बोला आपको, उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था. किसने लिखा था? वो जो है अशोक द ग्रेट, उसने लिख दिया कुछ, और उसने ऐसे लिखा उस चीज को, वो खुद छोड़ के बाकी सभी लोग लगभग एक प्लेटफॉर्म पे आते थे. फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी क्यों ना हो, या फिर कोई एक सिटीजन, मतलब टीचर है या फिर स्टूडेंट है या फिर पेरेंट है, सबकी ड्यूटीज लिख दी उसने, ये करना है. अब इसमें होता क्या है? इसमें ना आप देख सकते हो कि रैशनली चीजों को अरेंज करो. ठीक, पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? उसने खुद ने बोला कि मैं तो भाई देवा नामक पियत थी, मतलब मैं जो देव है ना,
beloved of God हूँ, तो मैं आप लोगों से ऊपर ही हूँ, तो आप सब्जेक्ट हो. आपका कॉन्स्टिट्यूशन आप ही को गॉड बनाता है. देखिए हम लोग कैसे, आप सब्जेक्ट नहीं, आप किंग हो. अब देखो ये बदलाव हुआ, ये चेंज हुआ. तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की. And almost all of them succeeded in writing constitution. Some of them kept writing again and again, again and again. Like you have Nepal, and we had Bangladesh also. Pakistan, yeah, to a certain extent, they kept amending the constitution. But their constitution is also one of the finest constitutions ever written on the earth. Maybe the finest constitution. अगर हम लोग उसका नॉन सेक्युलर एस्पेक्ट अगर छोड़ दे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी बहुत अच्छा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑफ कोर्स जब जिन्ना जैसा कोई एक बंदा अगर लिखेगा या फिर उसको सपोर्ट करेगा, लिखने में हेल्प करेगा, तब तो वो मास्टरपीस ही बना. इसमें कोई डाउट नहीं. तो वो भी मास्टरपीस है, हमारा भी तो मास्टरपीस ही है, देखेंगे हम लोग. लेकिन है ना, हाँ, इकडे ते नॅशनलिझमची डिबेट आणायची नाही बघा आपल्याला. एज अ स्टुडंट विल हैव टू ओनली सी. नहीं, आप कभी जाके देखो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से कुछ पार्ट है ना यार फैब्युलस ऐसे लिखे हैं. कोई बात नहीं, चलो हम लोग वो पाकिस्तान अंदर बोल. सो हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री में, पर्टिकुलरली जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इन्होंने कोशिश की कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिया एक आता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आप नेपाल भूटान की भी बात कर सकते हो, श्रीलंका की बात कर सकते हो. लेकिन उससे पहले भी तो काफी सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. जैसे हम लोग फ्रांस की बात कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, और फॉर दैट मैटर इवन द वेस्टर्न पार्ट लाइक यूएस एंड कनाडा, इनकी भी बात कर सकते हैं. टुवर्ड्स ईस्ट यू हैव ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इनकी चाइना की बात कर सकते हैं. तो लगभग हर एक, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब यू फाइंड दैट दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस. वन मस्ट आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हाट माइट बी द नीड, why almost every or major countries resorted to writing down something afresh when they all had, including us, we all had some rules and regulations already going on in regulating societies. What changed? And when exactly? So it was precisely during the time of advent of science in our lives. It is advent of science, basically I'm talking about age of enlightenment and renaissance, right? So that is the time when we started looking at, or we started perceiving the world around in a different manner, in a manner that was hitherto unknown, right? Not known, not explored earlier. We tried to find out or apply science and scientific principles to understand the life, around us, and try to make a meaning of it. And this started in Greece, right? So in Greek being more particular, so Greek उसका हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा. ये समझ, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप फिर भी देखोगे वैसे, ये समझने के लिए कि आइडियाज का जेनेसिस कहाँ. वैसे जेनेसिस आपको उन आइडियाज का इंडिया में भी मिलेगा, ऐसे नहीं, बात ही नहीं ना, बिल्कुल है. लेकिन हम लोग मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर आज की डेट की बात करें, so if you talk about today, what is the source of this constitution, from where it came, right? So you will find that we basically started changing ourselves, and I'm not talking about only India, we're talking about all, like inhabitants of this earth, right, divided into different principalities or different countries or different nation states, right? They started a change. The first change that you see on a large scale was French Revolution, right? Even before that, we can definitely talk about American Revolution, but then it was French and American Revolution which ignited the things, and then that story started, story of becoming something called as modern, as somebody used the word civilized. They came from England and they said that it is white men's burden of civilizing the world, and as if they are very much civilized, right? त्यांना वाटलं की आपल्याला इकडे भारतातून इंजेक्शन दिले की सगळे, I mean, say like they coming here, right, and giving us a dose of civilization, we'll have to automatically become civilized. So we said that your dose is ineffective on us over the period of time. तो इसमें एक मेजर स्टेप जो हमने लिया, वो मेजर स्टेप है 1885 establishment of Congress, right? And then the next major step that we took in this direction, that is in the direction of becoming one identity called as India, as a nation state, as we use the term nation, is 1947, right? But then we just became independent in that particular year, right? Actually, giving us identity is commencement of this constitution, that is 26th of January 1950. Becoming independent and becoming republic are two different things, and they mean two different things. If you read the preamble, you will not come across word independence or independent, but you will come across word something called as sovereign, right? Democratic republic. So these words stand for something, and that something we will understand over the period of time. So when we talk about constitution, as I said, like why do you need constitution when we have all those rules being governing us, right? So here we need to essentially divide, maybe create a distinction, right? What type of a distinction? So here, what you all need to know is there are basically two domains of our lives. One is individual domain, and the other one is public domain. This individual domain can also be called as private domain. There are certain laws which are applicable
to an individual in his or her private domain. There are certain laws which are applicable to an individual when he or she is in public space. Laws which are applicable here are called as public laws. Constitution being one of them, criminal laws being one more thing, and administrative laws is other category of laws. So these three categories of laws are applicable. Briefly speaking, these are applicable in public domain. Are you getting it? I'll give you an example. Don't worry. So far as individual domain is concerned, the laws work very differently. Here you will find that there are something called as tort laws, something called as contract laws, and you have family laws, etc. So you even list them. Now, what is the difference between these laws? So I'll give you just one example to understand how these laws are different, or how these things are different. Like we will talk about equality in constitutional law. Constitution को समझते हैं. Equality of status and opportunities and equal treatment in equal circumstances, blah blah blah. बहुत बात करते हैं. घर में जाने के बाद फिर आप जाके पूछना, आज हम लोग आर्टिकल 14 पढ़े जिसमें इक्वालिटी की बात की है. तो डैडी आज आप क्या करो, किचन का पूरा काम आप संभालिए. इक्वालिटी होना चाहिए. आज आप करोगे, कल हम करेंगे. डैडी बोलेंगे भाई इक्वालिटी आते आते दरवाजे में बाहर रखो. घर में घर के रूल चलते हैं. कौन से रूल चलते हैं? समझ में आ रही बात? ऐसे समझाना तो नहीं चाहिए, बस आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारा लॉ क्लास नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल देता हूं. समझ लीजिए, ओंकार के पास ना ये जो पेन है इसका शॉप है. मुझे चाहिए थे 1 लाख का ऑर्डर दिया, 1 लाख पेन का ऑर्डर दिया. एग्रीमेंट हुआ हमारा. उसने बोला कि ये दिन को ना तुम्हें मैं इतने यूनिट्स दे दूंगा. बिल्कुल 50% पहले पेमेंट कर दिया मैंने. 50% पेमेंट बचा है. जिस दिन बोला था उस दिन तो डिलीवरी आई नहीं. बोला नहीं और 1 हफ्ता लगेगा. बोला 1 हफ्ता लगेगा यार. तो टर्म्स कुछ हमारे थे एग्रीमेंट के, कॉन्ट्रैक्ट के, ये तो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो. ये किसके बीच में हुआ? मेरे और ओंकार के बीच. यहाँ पे स्टेट का रोल नहीं है फिलहाल तो नहीं. अगर किसी का रोल है तो शायद हो सकता है जुडिशरी आए बीच. समझी कुछ बात आपको? तो समझ में आ रहा है? हम लोग इसेंशियली ये डोमेन के बारे में बात करेंगे. लगभग 95% ऑफ ऑल आवर लेक्चर्स वुड बी फोकस्ड ऑन पब्लिक डोमेन एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल और मे बी प्राइवेट डोमेन. समझ में आ रही है बात? However, there are definitely going to be some issues when you will find that something that goes on here appears to be contradictory to something that is here, right? And something that is going on here appears to be contradictory to Aadhaar card, Aadhaar, biometric identity. किसकी identity है? स्टेट ने तो नहीं दी. स्टेट ने तो आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं बनाए थे. जन्म हुआ है अभी, इसके फिंगरप्रिंट्स इस तरह से बनाते. आपका खुद का है ना वो. स्टेट ने बोला मेरे साथ शेयर करो. हमने आंख बंद नहीं, आंख खोल के शेयर कर दिया. स्कैन किया रहेगा आपका. हुआ कि नहीं हुआ? है ना सबके पास आधार कार्ड. लेकिन नहीं, आपकी प्राइवेसी का कोई प्राइवेसी नहीं है. मैं तो मेरा आधार कार्ड नहीं शेयर करता किसी भी जगह पे एक्सेप्ट फॉर पैन कार्ड. अब वो वैसे भी चला ही गया रहेगा जहां जाना. चलिए कोई बात नहीं, बात करेंगे इसमें. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्राइवेट कंपनीज आपको आधार कार्ड के लिए कंपनी कर सकते हैं. ओनली इफ यू आर गवर्नमेंट स्कीम्स बेनिफिशियरी, ओनली देन इन दैट केस आप आधार कार्ड मैंडेटरी है. अदरवाइज तो ये आप पहले समझ लो हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन कहां अप्लाई होता है? पब्लिक डोमेन. सेक्युलरिज्म है बिल्कुल है. घर पे फिलहाल तो नहीं. जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप घर पे भी अप्लाई करेंगे. मार पड़ेगी तो मेरे पास नहीं है. सो दिस इज बेसिक डिफरेंस पब्लिक एंड प्राइवेट. नाउ व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट लॉज, we call them traditions, we call them customs, we call them some rules which are unwritten, but then we follow them. That is part of our culture. किसका पार्ट है? कल्चर का पार्ट. कॉन्स्टिट्यूशन भी कल्चर की. कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर होता है, हर कंट्री में होता है. किस हद तक प्रैक्टिस किया जाएगा, किस हद तक नहीं, वो बात डिफर कर सकती है. कुछ समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी वेरी गुड. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑब्जर्विंग अ फास्ट, है ना, उपवास, तो भाई हम लोग सुबह खाते हैं, शाम को नहीं खाते. किसी और घर में शाम को खाते हैं, सुबह नहीं खाते. काला नमक यूज करते हैं, व्हाइट नमक यूज करते हैं, और न जाने कौन से नमक यूज करते हैं. इनके घर में पोटैटो खाया जाएगा, उनके घर में और कोई स्वीट पोटैटो खाया जाएगा, इनके घर में वो नहीं खाया जाएगा. व्हाट आर दीस थिंग्स? दीस आर नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ रूल्स व्हिच गवर्न्स. वी हियर आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोस रूल्स, बट देन स्टिल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट दोस रूल्स विल slowly fade away and will create space for more rational rules governing our individual lives also. Example, talaq hai biddat, triple talaq, right, was declared by Supreme Court as unconstitutional. Am I correct? Right? Supreme Court ने constitutional. कहाँ से आ गया भाई? Constitution में तो नहीं लिखा है. ये तो हमारी घर की बात है, मेरे घर की बात है ना. तो कोर्ट ने कैसे बोल दिया इसके ऊपर? मैं डिसाइड करूंगा ना, मैं मुझे तलाक देना है, ये देना है, दैट इज माय. तो नहीं, अब रैशनैलिटी आप देखोगे धीरे धीरे ऐसे मैटर्स पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की कोशिश करोगे, या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना, जहां पे इससे पहले कभी भी इस चीज की बात नहीं. सभी माला के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे.
बात करेंगे उससे। तो आप ये कुछ there are few things which you need to understand, but before we go into that particular thing, right, let us understand what preamble is. अब आते हैं preamble के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुछ नहीं भाई, रूल्स। आज के डेट में ये रूल्स हमें चल पिछले 75 ईयर से हम लोग चला, मतलब हम नहीं चला रहे एक्चुअली, हमें एक्सेप्टेबल। कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, वो बोलते हैं चेंज कर दो, है ना, तो है ना, जो बोलेंगे चेंज कर दो, मालूम है नहीं मालूम? आपने है कोई जो चेंज करने की कोशिश करना चाहता है तो बिल्कुल करना चाहिए चेंज, बिल्कुल इसको आप फेंक दो, नया बनाओ। बस कोशिश ये रहे कि इसके जैसा ना हो। बनेगा अगर कुछ नया तो यही बनेगा, और कुछ नहीं बनना, मैं गारंटी से बताता हूँ। क्योंकि बनाने की कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने की है, उसके बाद बना नहीं सकते आप दूसरा कुछ। यही है जो बेस्ट है आज के डेट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आगे 50 साल, यहाँ से आगे 50 नहीं, 500 years the same constitution would make relevance or make sense. So वो बात है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात है नहीं। तो अब होता क्या है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो पहले उसको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन को बोला जाता है प्रीएम्बल। अब आप किसी भी लॉ को पकड़, कोई भी लॉ, लॉ मतलब स्टैट्यूट मतलब एक्ट, बिल नहीं, लॉ, कोई भी लॉ, उसका पहला आर्टिकल जो होगा ना, या फिर पहला सेक्शन जो होगा ना, या फिर शायद हो सकता है उसको एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज ही हो, वो इंट्रोड्यूस करेगा ये लॉ बना क्यों। अगर नहीं इंट्रोड्यूस करेगा और आप डायरेक्ट सभी आर्टिकल्स पढ़ लो तो आपको यू विल नॉट मेक अ सेंस आउट ऑफ इट, लाइक व्हाट माइट बी द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? एवरीबॉडी। सो पर्पस, इंटेंशन, आइडिया इज रिटन इन समथिंग कॉल्ड एज प्रीएम्बल। देयर आर सम एक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट्स। कुछ एक्ट्स है जिनको प्रीएम्बल अलग से लिखा मिलेगा, कुछ एक्ट्स है जिनमें आपको इंट्रोडक्टरी क्लॉज लिखा मिलेगा, कुछ एक्ट्स है जिसमें आपको पहला सेक्शन उसी की बात करेगा, नेचर, स्कोप एंड इंटेंशन। सो ऐसा कोई लॉ नहीं होगा जिसमें पहला सेक्शन या फिर जिसमें कोई इंट्रोडक्शन, ये बाय डिफॉल्ट जरूरी है। समझ में आई बात? हम लोग आज उस इंट्रोडक्शन की बात करें। आज से शायद कल भी लेक्चर है हमारा, देन अच्छा वी हैव 2 लेक्चर्स दिस वीक, राइट? आज, कल और एक लेक्चर, शायद हमें 3 लेक्चर लगेंगे इस चीज को खत्म करने में। ठीक, पहले वाले लेक्चर्स थोड़े आई विल कीप माय पेस स्लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो दैट इज प्रीएम्बल, एकदम ब्रीफ। एट द एंड ऑफ द प्रीएम्बल मैं बाकी चीजें आपको बताता हूं। अच्छा, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, वो प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये क्या होता है ये पॉलिटिकल लेक्चर में क्या होता है, ये कंप्यूटर ला आवडत नाही हम तो काय रिस्पॉन्ड करते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, लेट अस रीड दिस प्रीएम्बल फर्स्ट एंड देन विल कम टू द पर्पस एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into, he said constituting something. What are you constituting? India. To constitute India into something, है ना? तो into what? Into sovereign state. Into what? Socialist, secular, democratic, republic state आपको इंडिया बनाना था। इससे पहले क्या था? इससे पहले मुगल एम्पायर था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत था, उससे पहले शायद कुछ और था, है ना, ब्रिटिश भी थे, हाँ ये भूल गया। तो इंडिया नहीं था, इंडिया नहीं था, लेकिन यही लैंड, यही लोग, यही ज्योग्राफी, आज हम लोग उसको इंडिया बोलते, पहले उसको शायद कुछ और बोला जाता। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं अभी, है ना। आई एम नॉट विलिंग टू यूज दैट वर्ड एट दिस मोमेंट, हम लोग बात करेंगे उसकी, लेकिन अभी नहीं। तो पहले कुछ और था, लेकिन टेरिटरी यही थी, द सेम टेरिटरी, ऑलमोस्ट सेम पीपल, आई वुड से लाइक योर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स, राइट? वी हैड किंग्स गवर्निंग हियर, looking after administration of law and order and etc. Am I correct? Right. So what you constituted, we the people of Mughal Empire having solemnly resolved to constitute Mughal Empire into sovereign socialist वगैरह, वो भी सेक्युलर था, डेमोक्रेटिक नहीं था, रिपब्लिक नहीं था, इतना छोड़ दिया जाए। तो सॉवरेन तो वो भी था, सोशलिस्ट था, तो हाँ बिल्कुल था। अगर आप जाके पीछे देखोगे, जिस मुगल पॉलिटी वाज रेवेन्यू स्टेट, लेकिन फिर भी they definitely used to take care of people, so we can definitely search, at least find some socialistic aspects in it. And so far as secularism is concerned, don't mind, but I believe like आज जितना हम लोग सेक्युलर, उससे ज्यादा मुगल एम्पायर सेक्युलर का समझता है ना, that was much better, but then ठीक है, कोई बात नहीं, don't get offended, रियलिटी अब जैसे है वैसे है ना। तो उस वक्त मुगल एम्पायर था, उससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर सकते हैं, उससे पहले शायद चलो हम लोग और पीछे चले जाए तो मौर्यन एम्पायर, बी द सब्जेक्ट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट मौर्यन एम्पायर इनटू समथिंग सॉवरेन एंड ऑल। मौर्य तो बिल्कुल सोशलिस्ट थे भाई, वो तो पीडीएस सिस्टम चालू किया उसने, है ना, उसके बाद वो नेशनल पार्क्स भी चालू किए, है ना, वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके पास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। बोलने का इंटेंशन यहाँ पे क्या, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग
something called as India. Now the question is, when this country or when this identity was given to this particular land and people residing there, exactly the day or maybe time or maybe era or age where this identity was given to this land and to people residing here, right? It is that time or that time slot or maybe that time on time scale, right? You will have to identify to understand making of India. इंडिया कब था? ब्रिटिश टाइम में था क्या? तो हाँ बोल सकते हैं हम लोग, था शायद, हमें नहीं मालूम था कि नहीं था। इंडिया कब था? अकबर के टाइम में था क्या? हम लोग शायद बोल सकते हैं हाँ था, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसको इंडिया बोलते थे कि नहीं बोलते। आज बोलते हैं ना, लेकिन तो क्यों बोलते हैं ये समझना चाहिए। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब आज हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम खुद को ये नाम दें जिसको बोलेंगे इंडिया। कहाँ से ओरिजिनेट होता है वगैरह मेरे ख्याल से आई गेस यू ऑल नो दिस, है ना? भारत comes from Bharata clan, India comes from Indus, the land which is east of Indus is India. त्यांना बोलते हैं तसं, ते म्हणाले हो सिंधू का हो गया, हम लोग लेके घूम रहे हिंदू, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो सिंधु होते, अभी हिंदू है, सिंधु होते नहीं, अगर वो बोल पाते समझ लीजिए लोग, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, किसी का प्रोनाउंसिएशन इतने बड़े पॉपुलेशन का रिलीजन डिफाइन करते हैं और लैंड को नाम भी दे दिया। मतलब हमने हमारा तो कुछ इजाद नहीं किया, तो फिर हमने बोला नहीं हमारे पास हमारा क्या है, तो भारत को भारतवर्ष है, चलिए उधर से ले लिया आपने, तो वो आपका चॉइस है, इंडिया फिर हिंदुस्तान भारत जो भी है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चाहते बोलो तो इंडिया दैट इज भारत एंड हिंदुस्तान ऐसे लिख सकते हो, तो उन्होंने सोचा नहीं वो सही नहीं रहेगा, इंडिया दैट इज भारत हमने आइडेंटिटी लिया। इसके ऊपर बात करेंगे बाद में, जब आर्टिकल 1 पढ़ाऊंगा तब। एक मिनट टाइम इट इज वेरी टाइम। क्या बना रहे हम लोग? कब चालू हुआ ये एफर्ट्स? आप बोल लो 90 बना नहीं है, मतलब बन रहा है प्रोसेस में। आइडेंटिटी मिली इंटरनेशनल, ये इंडिया है। आइडेंटिटी क्यों नहीं बना तो मैं बताऊंगा, हम उसी की बात करेंगे पूरा, मतलब यहां से आगे एकदम लास्ट लेक्चर तक आपको बिल्कुल वो सेंस मिलेगा। इंडिया दैट इज भारत, sorry, we the people of India have solely got India to a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its persons। नहीं, जो इंडियन सिटीजन है बस वो, बाकी का नहीं मालूम है ना। कोई माइग्रेंट है तो वो अपना देख ले, जो सिटीजन है उसकी बात की जा रही है, प्रेम, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आप, समझिए ना बात, है ना। ऐसे नहीं होगा कि चलो यार पाकिस्तान में काम नहीं चल रहा, ठीक, चलो इंडिया में चले जाते हैं, वो पीएम हमें भी प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा। ये सिर्फ सिटीजन को हम लोग गारंटी दे रहे हैं। किस चीज की गारंटी है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring dignity of individual, right? In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and give to ourselves this constitution। ये आपका प्रीएम्बल है, आपने पहले पढ़ा है और शायद हो सकता है आपको पढ़ाया नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते इसको, है ना। So in general terms it is called as soul of the constitution, mirror of the constitution, और क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, और क्या बोलना है, हाँ, गाइडिंग स्पिरिट ये लगे, guiding spirit of government for government and people. This is objective statement. This is purpose. This reflects intention of constitution. But preamble का क्या purpose होता है? मतलब purpose क्यों बनाया जाता है? As you can see here, it works acts as a soul of the constitution. ये soul है constitution का, है ना? Liberty, equality, justice, fraternity, ये soul है constitution. Indicates source of constitution. We, the people of India, है ना? Soul. सॉरी, सोर्स कहां से आता है कॉन्स्टिट्यूशन को हम देते हैं, मैं नहीं, ओंकार अलग नहीं, अकेला नहीं, कोई और एक इंडिविजुअल बंदा, सिर्फ कोई एक कम्युनिटी नहीं, वी द हिंदूज, है ना, वी द मुस्लिम्स नहीं, वी द अपर कास्ट अपर क्लास नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑथोरिटी बात करेंगे इस पर थोड़ा डिटेल। सिग्निफिकेंट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको इस स्लाइड में नहीं बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको बताता हूं। इंडिकेट्स इंटेंशन ऑफ थिंग्स, देखो इंटेंशन क्या, इंटेंशन, इससे क्या इंटेंशन समझ में आ रहा है आपको, बताइए मुझे, इसमें आपको क्या इंटेंशन समझ में आ रहा है? पढ़िए, राइट प्रोटेक्ट करने की बात की जाए, दिखा है ऐसे कुछ राइट के बारे में बात की जाए, हाँ है, शायद जस्टिस देने की बात की जाए, है ना, लिबर्टी की बात की जा रही है ना, यस यस और नो, करेक्ट। और कुछ उनका इंटेंशन था कि सॉवरेन कंट्री बने, है ना। और एक बात डिस्क्लेमर में सजेशन, वैसे भी हम लोग शाम को मिलेंगे 3 से 5, 5:30 से 7:30, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि 2 घंटे के लेक्चर में आपको नींद आए, पॉसिबल, यू कैन कैरी
कप ऑफ कॉफी ऑलरेडी टॉपिक का छोटा बिल्कुल कॉफी पण तुम्ही घेऊन बसू शकता मला पॉलिटिक्सच्या लेक्चरसाठी बरं काय अडचण नाही शेजारच्या अडचण होणार नाही त्याची काळजी ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आई वुड नॉट टॉलरेट दोज वर्ड्स विद ऐसे कुछ नहीं अगर बिल्कुल नींद आ रही है आराम से सुनो रिकॉर्डेड लेक्चर को लेकर सुनने का बेहतर कोई दिक्कत नहीं लेकिन कोशिश करो कि आप अलर्ट है ना मैं किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ दिस इज रेगुलर थिंग आई अंडरस्टैंड दिस वैसे भी एसी चल रहा है ठंडा ये हो सकता है लेकिन आप लोगों को यू कैन कैरी कप ऑफ योर मे बी चाय बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नाही बरोबर ना मी तुम्हाला सिरियसली सांगतो मी फक्त मला टॉलरेट काय होत नाही ते कधी तसं काही एक्झाम्पल आलं तर सांग आता तसं काही दिसत नाही ते तसं दिसलं की तुम्हाला कळलंच नाही मला काय टॉलरेट ओके सो इंटेंशन एज यू कैन से इज रिटन गाइडिंग स्पिरिट फॉर गवर्नमेंट वन में आस्क अ क्वेश्चन व्हाट सॉर्ट ऑफ गाइडिंग स्पिरिट गवर्नमेंट के लिए देखिए यहाँ पे इतना ऐसे लिखा हुआ है क्लियर बरं काय हे फक्त सारखं होतं मैंने वो दूंगा हाँ नहीं लेके सो गवर्नमेंट के लिए बोला गया कि गवर्नमेंट क्या रहेगा सेक्युलर है ना तो फिर आपका गवर्नमेंट सेक्युलर है नहीं है अच्छे बाद में डिसाइड करते हैं कंफ्यूजन बता ही रहा है गड़बड़ है मतलब मैं तो कोई एक वो चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट नहीं मालूम इनका अटायर देख के मुझे एकदम अपने आ जाता हूँ मैं याद स्टेट सेक्युलर है कि नहीं मतलब अटायर से सेक्युलरिज्म नहीं डिपेंड होता मुझे ऐसे लगता है मेरी गलती है वो उनकी गलती नहीं मतलब मैं किसी स्टेट के है देखा था तो वो ये बोला गया कि भाई आप सेक्युलर रहो आप सोशलिस्ट रहो आप एंश्योर करोगे कि लोगों को जस्टिस मिले सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंश्योर करोगे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप है ये किसको गवर्नमेंट को भी बोला पीपल लोगों को भी बोला गवर्नमेंट को बोला कि ये लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन थॉट एक्सप्रेशन वगैरह गवर्नमेंट बोला बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारे पास सेडिशन का लॉ है क्या किया लॉ तो फिर हम लोग पकड़ेंगे देखते हैं उसकी बात करेंगे हम गाइडिंग स्पिरिट है गवर्नमेंट की इक्वालिटी प्रैक्टिस करेगा गवर्नमेंट और हम लोगों के लिए प्रैक्टिस एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल समझ में आ रही है कोई बात नहीं तो दीज आर बेसिक आइडियाज बेसिक थिंग्स प्रीएम्बल की जरूरत क्या है तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के लिए इन चीजों के लिए प्रीएम्बल की जरूरत है अब हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट शायद मुझे लगता है पहले दो या तीन पॉइंट्स आज लोग कवर कर सकते हैं we the people of India having solemnly resolved to constitute India into something लेकिन उससे पहले देखते हैं we the people of India का क्या सीन है मतलब so it basically talks about it reflects something what is republican character and democratic character republican का क्या मतलब होता है या फिर चलिए उससे पहले थोड़ा ये बात करते हैं कि we the people of India किसने बोला we the people of India select करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस चीज के ऊपर बात हो रही when they were discussing this they were like we are not representatives of people and we shouldn't be using this particular term, while offering this constitution. Some of them were of the opinion that we should say, we the members of the Constituent Assembly, having solemnly resolved to constitute India into this and then, etc. Some others say that no, we should derive our legitimacy of this authority of the Constitution from some supernatural power, and not from